जय जगन्नाथ समस्त को। पूर्व पाठ में पढ़ते फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लिमिट स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, तब लॉज ऑफ फ्रिक्शन से पढ़ते। तो आज जो फ्रिक्शन रो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। तो देखो फास्ट बुझे एंगल कोटा। सपोज गोटे सरफेस उपरे गोटे बॉडीटे अच्छी। ओके, तो दिस बॉडी सरफेस उपरे ये मूव करिबा। जब तक ये नहीं मूव करता तब तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता होगा। जब वो जस्ट टू मूव देन इट इज सेड टू बी लिमिटिंग फ्रिक्शन आप एक्ट करिवो। तो जिते मूव करिवो तो सेते काइनेटिक फ्रिक्शन तापरे अप्लाई हो। तो फ्रिक्शन कोठी हो ना कांटेक्ट फेस रे। तो ये हैला गोटे बॉडी, तो ये गोटे बॉडी जो दीटा बॉडी रो कांटेक्ट जगह फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करिवो। ओके, तो सपोज एपटे अप्लाइड फोर्स एक्ट कला। सपोज पी हो हमर अप्लाइड फोर्स। ओके, आउ तो फ्रिक्शनल फोर्स तो एपटे एक्ट कला फ्रिक्शनल फोर्स जो बॉडी स्टार्ट टू मूव, तो दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एक्स मैक्सिमम डेनोट करछे। ओके, तो जेहेतु एटा बॉडी तो तार वेटटा एक्ट करिवो तळकू, जाको W इज इक्वल टू mg। प्रत्येक बॉडी रो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करिवो तळकू, तो वेट आसीबो तळकू। तो तार नॉर्मलटा आसीबो ठीक परफेक्ट 9 डिग्री आसीबो नॉर्मल। एटा हो हमर n नॉर्मल। ओके, तो से एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोन हमर नॉर्मल आउ हम जानचे नॉर्मल आउ फ्रिक्शनल फोर्स एमाने परस्पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेरी हेबे। तो एमानकर रिजल्टेंट द नॉर्मल रिएक्शन आउ स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन जोटा एमानकर रिजल्टेंटा सपोज कोटा हबो। तो पैरेललोग्राम गोटे ड्रा करिवो। ओके, तो एटा हला हमर रिजल्टेंट। ओके, तो रिजल्टेंट ए रिजल्टेंट आउ नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट विथ नॉर्मल रिएक्शन। तो दिस एंगल सपोज थीटा, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बुझि पारलो? तो जेतले गोटे बॉडी आ गोटे बॉडीर सरफेस आ गोटे सरफेस रे आ गोटे बॉडीर सरफेस ऊपर रोलिंग मूव करथि। मूव करिया पूर्व तो अप्लाइड फोर्स दियो तार गोटे नॉर्मल रिएक्शन आ तार लिमिटिंग फ्रिक्शन। ते लिमिटिंग फ्रिक्शन आ नॉर्मल रिएक्शन रिजल्टेंट सहित नॉर्मल रिएक्शन जो एंगल क्रिएट करे दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अर्थात यदि आम लिखा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विथ नॉर्मल रिएक्शन। रिजल्टेंट ऑफ कार नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन और रिजल्टेंट सहित नॉर्मल रिएक्शन जो एंगल क्रिएट करे दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो राइट डाउन लिखो द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, the angle of friction is defined as क्या मतलब the angle between resultant of limiting friction, resultant of limiting friction and normal reaction and normal reaction का सहित makes with normal reaction। The angle between resultant makes with normal reaction. This angle is called as angle of friction। ओके, तापर आमे डिराइव करिया। डेरिवेशन करिया।
कौन डेरिवेशन करिया लेख लेट्स कंसीडर देख W इज इक्वाल टू वेट कହାର वेट ऑफ द बॉडी और कହାର वेट ये बॉडी वेट होची W एंड R इज इक्वाल टू नॉर्मल रिएक्शन सपोज P हो हमर अप्लाइड फोर्स अच्छा सब ना टिके दे दबा सपोज ए पॉइंट हो O ओके ए पॉइंट हो हमर B एटा हो A एटा हो हमर C देख तो OC कौन हमर तो रिजल्टेंट OC होची रिजल्टेंट कହାର ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन ओके तो एटा लिखी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अच्छा थीटा एंगल बिटवीन कार R and resultant OC ओके तो सरला एतिक लिख सारा पर कौन कर एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिख बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन देख बाहर करिया तो देख ये थीटाटा अच्छी बर्तमान यार बाहर करिया टैन थीटा केते हबो कहलो टैन थीटा केते हबो टैन थीटा बाहर कर टैन थीटा जानी छे अगर एटा थीटा हुए टैन एटा होची हमर बी थीटा सहित जो एंगल लागि तो बी जो साइड टा तो बी ता अपोजिट साइड होची पी एटा होची एस टैन थीटा कोन पी बाय बी सम्मुखीन बाय संलग्न ओके तो ये टैन थीटा केते हबो सम्मुखीन होची बीसी संलग्न होची कोटा ओबी तो आसबो केते बीसी बाय ओबी अच्छा बीसी सहित आम केते लिखि परिया ओए बाय ओबी अच्छा ओएटा कौन देखिल एफएस लिमिटिंग फ्रिक्शन हमरो कौन लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय अच्छा ओबीटा कौन सॉरी ओबीटा हो हमरो नॉर्मल रिएक्शन द नॉर्मल रिएक्शन हो आर ओके अच्छा दिस इम्प्लाई दैट देखो tan थीटा इज इक्वल टू एफएस मैक्सिमम बाय आर पूर्व लेक्चर कौन कहते एफएस लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन कौन होता कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो यहाँ लिखिपर आम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ओके जेहेतु μs इज इक्वल टू एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम बाय आर एटा हम जानिचे हमने कौन कर पारिया thus the coefficient of static friction is equal to tangent of the angle of friction
फ्रिक्शन ताले कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मध्य केमति डिफाइन करिया इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिस इज द हम कहि परिबा रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन and coefficient of friction angle of friction and coefficient of friction angle of friction and coefficient of friction जदि पटे जो what is the relation between angle of friction and coefficient of friction that angle of friction हला mu s coefficient of friction हला sorry angle of friction हला theta coefficient of friction हला mu s तो जदि हम कहि पारे आकु जदि लिखि पारे हमें थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स mu s एटा हमें लिखि पारे बट tan थीटा इज इक्वल टू mu s तो एटा हला एंगल ऑफ फ्रिक्शन रो डेरिवेशन तो वर्तमान आम जीवा एंगल ऑफ रिपोज आड़ को एंगल ऑफ रिपोज ओके तो एंगल ऑफ रिपोज कौन देख गोटे इनक्लाइन प्लेन नवा सपोज एटा गोटे इनक्लाइन प्लेन तो ये सपोज गोटे इनक्लाइन प्लेन तो ये गोटे वस्तु गोटे दबा कोटा कोटा ओके देख एटा गोटे वस्तुटे अच्छी खाताटे हेल्ले भल बुझीपर देख एटा प्लेनटा भाविन एटा गोटे प्लेन एटा प्लेन तो ये देख ये गोटे वस्तुटे मुझे रखी एक भलरे वस्तुटे अच्छी बर्तमान देख प्लेन सहित एटा पार्लाल होगी तो वस्तुटा उठेले एंगल देख बर्तमान देख वस्तुटा गति करूनी मूव करूनी आउ टिके उठेली आउ टिके उठेली आउ टिके उठेली आउ टिके उठेली बा एतिक उठला बेलू गतिटा गति कर देख ये जो एंगलटा हूँ आमर एंगल ऑफ रिपोज तो बुझीपार तो बर्तमान लिखिया को एंगलटा करुच्ची गोटे देख बुझ फास्ट एटा गोटे इनक्लाइंड प्लेन ए प्लेन एटा गोटे इनक्लाइंड प्लेन तो ये कौन अच्छी गोटे बॉडीटे अच्छी ओके तो जेपर्यंत ये स्थिर अच्छी स्टैटिक अवस्था अच्छी से पर्यंत एंगल ऑफ रिपोज हो पारे तो मिनिमम एंगल तो उठेले एमती ऊपर उठले जिते ये जस्ट स्लाइड टू मूव जिते मूव करने को आसो तो दैट एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज सपोज अल्फा नियो एंगल ऑफ रिपोज हो अल्फा मान द मिनिमम एंगल एंड इनक्लाइंड प्लेन मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन ए प्लेनटा होचे हमर कोन हॉरिजॉन्टल प्लेन ए प्लेनटा कहते हमर इनक्लाइंड प्लेन आउ हॉरिजॉन्टल प्लेन मध्य द मिनिमम एंगल व्हेन ए बॉडी प्लेस्ड व्हेन इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन जिते गोटे बॉडीटा को प्लेस करवा तो जिते जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन मिनिमम एंगल अति कम एंगल जोटा जिते स्टार्ट कर मूव करिया को तो दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज ना कौन डाउट अच्छे बुझिपार तो आगे डेफिनेशन लिखि दियो कौन लिखिया द एंगल ऑफ रिपोज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन द मिनिमम एंगल दैट क्या भितर दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन केतेबेले ना व्हेन ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जिते इंक्लाइंड प्लेन बॉडी प्लेस्ड करा जीवो जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन जिते स्लाइड डाउन करिवो तो लिखा लिख द एंगल ऑफ रिपोज is defined as
the minimum angle, the minimum angle का सहित minimum angle that जोटा कि जो angle की an inclined plane makes with the horizontal plane କେତେବେଳେ ନା when a body placed on it, when a body placed on it just begin to slide down, ओके तापरे डिराइव करिया डेरिवेशन ओके अच्छा हो फास्ट आपको मु देखिबी जेतले गोटे वस्तुटे गोटे इनक्लाइन प्लेन अच्छी तार देखिया कोड कौन तार वेटटा वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करिवो मन रखबले वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करिवो ओके नॉर्मल रिएक्शन टा बॉडी सहित 9 डिग्री एपड़ को एक्ट करिवो नॉर्मल रिएक्शन टा बॉडी सहित 9 डिग्री एक्ट करिवो ओके अच्छा तो एटा कहते एटा हमर होची W बा होची एटा mg तो एई समय कोन हबो तो रिजोल्यूशन वेक्टर रे पडिथिबो तो एई समय एटा जीवो केमति एटा होची रिजल्ट इनटू 2 कम जेतले वस्तुटा सीधा एक्ट कर नथिबो तो सेठी तार केते ताको केते वेट रे एक्ट करथु तो एटा दीटा कंपोनेंट रे डिवाइड हे जिवो mg डिवाइड इनटू 2 कंपोनेंट तो ये गोटे कंपोनेंट आसीबो आ गोटे ये गोटे कंपोनेंट आसीबो अच्छा एई जो एंगलटा केते हबो नै अल्फा सहित समान हबो एंगल सहित समान हबो एटा ज्योमेट्रिकली डेरिवेशन कले प्रूव हेची एई एंगलटा सहित समान हबो तो एटा हे जे हमर अल्फा तो अल्फा एंगल पटुकू जोटा रहला सेटा आसीबो जंचो mg cos थीटा रिजोल्यूशन वेक्टर पड़तिबो द वेक्टर रिजोल्यूशन रे फोर्सटा जदी दी भाग होचे तो रिजल्टेंट होबा फोर्स हो mg cos थीटा उठला sin थीटा तो एपटे आसीबो mg cos थीटा एपटे आसीबो mg sin थीटा ताले वस्तुटा जत्ते बेले तळुकू खसुची तो ताकू वेटटा तो भी टाणुची तळुकू केमति वेटटा तो किंतु वर्टिकल टाणुची तो एपटे कोन ये दीटा कंपोनेंट व्यक्त होची कि जनरली कोनोसी वस्तु रे वेट सहित नॉर्मल रिएक्शनटा बैलेंस हो जाउची तो एठी किंतु वेट द्वारा टाणुची नॉर्मल रिएक्शन सहित बैलेंस हो जाउची कि mg cos थीटा तो mg sin थीटा द्वारा बॉडीटा स्लाइड करूची तळुकू जदि बॉडीटा एपटू स्लाइड कला ताल तार अपोजिट डायरेक्शन रे एक्ट करिवो के लिमिटिंग फ्रिक्शन कारण तल को जस्ट बिगन टू स्लाइड डाउन तने लिमिटिंग फ्रिक्शन टा ए डायरेक्शन रे एक्ट करिवो जति कि बुझ परलो चित्र रु तो बर्तन सेटा लेख चन लेखिया let's consider W is equal to mg is equal to weight of the body केमती करूची ना एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड वेटटा सदा बेले वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड ओके एटा सेन एफएस मैक्सिमम लगी दो एटा होची लिमिटिंग फ्रिक्शन क्वाड एक्ट करची ना इनक्लाइंड प्लेन रो अपवर्ड एटा हला डाउनवर्ड एटा हला अपवर्ड क्वाड एक्ट करची इन एक्टिंग इन अपवर्ड कहार अपवर्ड
upward direction along the inclined plane. inclined plane ର ଏଟା ହେଲା downward, ଏଟା ହେଲା upward କୁ act କରୁଛି ଆମର limiting friction, and it balance କାହାକୁ balance କରୁଛି? the component mg sin थीटा। तो या बैलेंस करुच्ची बोली एटा स्लाइड करूनी, तो साइन थीटा। अच्छा तो ये लिखा सो एफएस मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू कौन पाइबा एटी mg sin थीटा। जदि जेपर्यंतटा स्लाइडिंग करनी जस्ट बिगन टू स्लाइड डाउन, बट स्लाइडिंग करनी जस्ट बिगन टू स्लाइड डाउन, जो एफएस मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन टा mg sin थीटा सहित बैलेंस अच्छे mg fs मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा। एंड आउ गोटे कौन ना आर टा नॉर्मल रिएक्शन टा क्या बैलेंस कर mg cos थीटा। तो लिखिपर आर इज इक्वल टू mg cos theta। सपोज इक्वेशन 1 दे, इक्वेशन 2 दे दियो। नाउ डिवाइडिंग द बोथ इक्वेशंस, नाउ डिवाइडिंग द बोथ इक्वेशंस we get कौन पाया limiting friction by normal reaction is equal to पाइबा mg sin theta by mg cos theta। this imply that अच्छा fs maximum limiting friction by r एने पूर्व पढ़ले कौन mu s एटा आगुर जानिचे। अच्छा mg mg कैंसिल होगले कौन आसीबो sin theta by cos theta केते आसीबो एटा अल्फा कर दियो mg अल्फा एटा tan अल्फा। तो ये म्यू एस इज इक्वल टू आसला tan अल्फा। ओके तामने कौन जानले एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज ये भी सेम आसला कौन लिखले थस द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिखिया thus the coefficient of static friction is equal to tangent of angle of repose। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टा एंगल ऑफ फ्रिक्शन सहित इक्वल टेंजेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टा टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज सहित इक्वल। हेंस कौन पाइबा म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ओके and आपको लिखि परिबा this is the relation between angle of repose and coefficient of static friction। ओके तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज सरी जाए। तो बर्तमान आम जा नेक्स्ट टॉपिक रोलिंग फ्रिक्शन ऊपर जा। देख रोलिंग फ्रिक्शन कौन जिते सरफेस उपरे कौन से एक बॉडी रोल करुच्ची रोलिंग उपरे अनदर सरफेस ऑफ ए बॉडी। तो कौन सी वस्तु ऊपर गोटे बॉडी ऊपर तले गोटे
आ गोटे वस्तु रोल करुच्ची तो रोल करिया समय मध्य से गोटे फ्रिक्शन एक्ट करुच्ची दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन तो राइट द फ्रिक्शनल फोर्स that acts when a body rolls over the surface of another body is called rolling friction. So write down the force of friction by the frictional force. The force of friction that acts now when a body rolls over the surface of another body rolls over the surface of another body is called rolling friction. तो देखा जाए रोलिंग फ्रिक्शन टा एक्सपेरिमेंटली शोज दैट परीक्षा कर देखा जाए एक्सपेरिमेंटली शोज कौन देखा जाए लिखि दियो जे रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन रोलिंग फ्रिक्शन जमते लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन करते आउ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन करते सेमती एक्सपेरिमेंटल शोज दैट द रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आउ रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द cylinder or wheel direct proportional to normal reaction inverse proportional to radius of the wheel जेतले रोलिंग करूची गोटे वस्तु उपरे जोटा रोलिंग कर जोटे सरफेस उपरे रेडियस उपरे इनवर्सली वेरीज करूची आ ता नॉर्मल रिएक्शन उपरे डायरेक्ट वेरीज करूची तो सेटा लिखिया फास्ट लिखिया कोन रोलिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction that means कौन rolling friction direct proportional to r गोटे इक्वेशन हो and rolling friction is inversely proportional to radius of जोटा रोल कर radius of rolling से सिलिंडर और व्हील जहाँ भी हो जोटा रोल कर सिलिंडर रोल करू व्हील रोल करू तार रेडियस ऊपर इनवर्सली वेरीज दैट मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन एफ आर ओके लिखि पार इट इज डेनोटेड एज लिखि दो एफ आर इनवर्सली टू 1 बाय आर क्वेश्चन 2 एटी आर इज इक्वल टू लिखि दो रेडियस ऑफ व्हील बा सिलिंडर देन कौन करिया दुईटा इक्वेशन कंबाइन करो बाय combining both 1 and 2 questions we get कौन पाइबा एफ आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर बाय स्मॉल आर अच्छा तापर कौन करिया प्रोपोर्शनल टा उठाई दबा एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर बाय आर एठारे म्यू आर इज इक्वल टू लिखिया सेमती कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन जो फॉर्मूला गुड़ा मन रखुता ओके तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ
mu r है कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, mu s है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, mu k है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और mu r है कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट वे लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन कौन सब लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन माने मेथड ऑफ प्रोसेस इन व्हिच वी रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन टा रिड्यूस करिया पे हमें कौन कौन सब यूज करछे, दैट इज कॉल्ड एज लुब्रिकेंट। द प्रोसेस ऑफ लुब्रिकेंट यूजेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज कॉल्ड लुब्रिकेशन। एमती चक्कर घर्षण है अधिक तेल दौचे, ग्रीस दौचे, लिक्विड किसी सॉलिड अंश भी दौचे, किसी गैसीय अंश भी दौचे, गैसीय मेटल्स माने थिंग्स भी दौचे, तो दैट इज कॉल्ड एज लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन द मेथड ऑफ प्रोसेस लाइक द मेथड ऑफ changing friction, that means reducing friction, reducing friction we can use is called lubrication। ओके, अच्छा तो जो जिनस गुड़ा यूज कर दैट इज कॉल्ड लुब्रिकेंट्स लिखिबो। द लुब्रिकेंट कौन ना इज ए सब्सटेंस, लुब्रिकेंट इज ए सब्सटेंस दैट इज सॉलिड है पारे, लिक्विड है पारे, गैस भी है पारे, व्हिच फॉर्म्स ए थिन लेयर बिटवीन two surface of contact, two surface of contact करी कौन करे एंड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिए। ओके, तो बर्तमान आम जा प्रोब्लेम उपर को। प्रॉब्लम गोटे कर ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, गोटे ब्लॉक रो मास 2 kg कौन करा है ना इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, तापर देछि द कोएफिशिएंट of static friction suppose 0.4। okay, और a force of friction suppose of 2.5 Newton is applied put it on the block। ना बाहर करिया कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between the block and the floor। okay, से जो ब्लॉक टा अच्छी जार मास होची 2 kg, तो ये पट गोटे फोर्स अप्लाई करा है। तो देख सॉल्यूशन कौन देला मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ द ब्लॉक,
तो m इज इक्वाल टू 2 kg। अच्छा आउ कौन देछि म्यू एस देछि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देछि केते 0.4 देछि। आउ कौन देछि आमे g रो मूल्य जानिछे 9.8 मीटर पर सेकेंड कारण g टा तळको एक्ट करूछि w इज इक्वल टू mg तो वेट टा बाहर करि परिबा। अच्छा वी नो दैट कौन जानिछे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस आर स्टैटिक कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू आर। अच्छा एठी आर टा कोड एक्ट करिवो देखो आर याडे तो आर सहित एमजी टा सेम हे जिवो दैट मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन टा केते हबो म्यू एस टा हमर देछि केते 0.4 इनटू आर टा को लिखि पारि हमें mg इज इक्वल टू 0.4 इनटू 2 g हला 9.8 तो टोटाल ऊपर कले 8 9 8 आसी हमर 7.84 न्यूटन। अच्छा तापर लिखिया आज जेहेतु द applied force केते देछि applied force 2.5 न्यूटन। applied देखो ये हला हमर कोन लिमिटिंग फ्रिक्शन टा कोड एक्ट करछि एपटे लिमिटिंग फ्रिक्शन केते हमर 7.84 न्यूटन किंतु हमर applied force हला केते applied force केते देछि 2.5 न्यूटन। 2.5 न्यूटन दिया है माने लिमिटिंग फ्रिक्शन टा बाछि 7.84 न्यूटन माने से वस्तुटी मूव करिवो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन टा मैक्सिमम टा अधिक अछि एति कि 7.84 हेले अप्लाइड फोर्स जस्ट स्लाइड टू मूव डाउन 7.84 हेले मूव करियो 7.84 रु कम हेले एटा स्टैटिक फ्रिक्शन हो तो बॉडी मूव करिवो नाही जेहेतु 2.5 न्यूटन इज लेस than the limiting friction is 7.84 Newton. So the block doesn't move. Okay. बर्तमान जे आमे नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गोटे प्रॉब्लम तो करबा प्रॉब्लम 2 a block of weight 20 न्यूटन गोटे ब्लॉक ऑफ 20 न्यूटन वेट होची is placed on a कोटे अछि गोटे हॉरिजॉन्टल टेबल ऊपर अछि हॉरिजॉन्टल टेबल ओके and here a tension T which can be increased to 8 Newton. 8 Newton before the block begin to slide करे पूर्वरु before the block begin to slide is applied as the block a force of 5 Newton 4 कर दो force of 4 Newton
keeps the block moving, keeps the block moving at a constant speed, at a constant speed. Once it has been set in, once it has been once it has been calculate almost तो बाहर करो कैलकुलेट सर कैलकुलेट कौन बाहर करिया म्यू एस static coefficient of static friction and mu k coefficient of kinetic friction देख देख प्रश्न भल बुझ गोटे ब्लॉक अच्छी गोटे हॉरिजॉन्टल टेबल ऊपर ए ब्लॉक ऑफ वेट 20 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल तो ये गोटे टेबल तो ये गोटे ब्लॉक अच्छी ओके जार वेट तल को एक्ट करुच्ची W इज इक्वाल टू mg इज इक्वाल टू अच्छे आमर 20 न्यूटन तार नॉर्मल एक्शनटा इड एक्ट कर आर ओके तो इे गोटे टेंशन टी टी जान गोटे सूता द्वारा गोटे फिता द्वारा आपको अप्लाई कर टणा जाऊँगी ब्लॉकटा अच्छी आपको कौन करा गोटे सूता बांधिक ये टणा जा तो टेंशन टाक कहते टेंशन फोर्स अच्छा तो बर्तमान लिखिया आम कौन बाहर करिया स्टैटिक फ्रिक्शन आउ काइनेटिक फ्रिक्शन बाहर करिया प्रथम स्टैटिक फ्रिक्शन बाहर करिया तापर काइनेटिक फ्रिक्शन बाहर करिया तो दुईटा बाहर करिया तो लिख फास्ट फॉर आग म्यू एस बाहर करिया तो फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन लिख फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन केंद्र बाहर करिया म्यू एस टा जाने म्यू एस कौन हमर एफएस मैक्सिमम बाय आर तो प्रथम एटा बाहर करिया तापर आर करिया तो देख स्टैटिक फ्रिक्शन अच्छा बर्तमान देख ये एठारे देख हियर शॉर्ट कर दो आर इज इक्वाल टू mg कारण आर टा mg सहित बैलेंस होची तो इज इक्वाल टू हम 20 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन टा mg सहित बैलेंस होची जेतु हॉरिजॉन्टल सहित आर टा होची 90 डिग्री एक्ट करूची बॉडी सहित ये भी 90 डिग्री वर्टिकल डाउनवर्ड वेट एक्ट करूची आर इज इक्वाल टू mg 20 न्यूटन तो हमर कोड वर्टिकल रे ओके एंड तो आमर कौन है अप्लाइड बाय फोर्स ऑफ 4 न्यूटन कीप्स द ब्लॉक मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड तो ये फोर्स ऑफ टीटा हूँ आमर 4 न्यूटन जो दिया ही जाऊँगी कांस्टेंट स्पीड रे जाऊँगी तो ये देखो तमें ये देख टी एफएस मैक्सिमम कौन जाऊँगी लिमिटिंग फ्रिक्शन इड एक्ट कर एफएस मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन ये एक्ट कर तो जिते बड़े बॉडीटा चाहू ना तो रेस्ट कंडीशन अच्छी बा स्लाइड टू मूव डाउन लिमिटिंग फ्रिक्शन माने कौन वस्तुटा मूव करूनी बट स्लाइडिंग जस्ट मूव टू स्टार्ट तो ये कौन करिया ना टी इज इक्वाल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन तामाने टी माइनस एफएक्स मैक्सिमम इज इक्वाल टू 0 ओके बाय टी रो मूल्य में केते दोचे फोर्स ऑफ ओनर कीप्स मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड तो ये टीटा केते दोची टीटा हो हमर 4 न्यूटन तम लिखि पारे एठी लिखि दो छाड़ एट लिखि दो टी हो 4 न्यूटन बट टी इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू 4 ना 8 न्यूटन 8 न्यूटन इंक्रीज एट 8 न्यूटन बिफोर द ब्लॉक बिगिन टू स्लाइड तो वस्तु गड़िबा पूर्व स्लाइड हेबा पूर्वरु ता ऊपर
टेंशन दिया होची केते टी 8 न्यूटन दिया हेची किंतु से वस्तुटी स्लाइड करनी ता माने लिमिटिंग फ्रिक्शन सहित टेंशन फोर्सटा सेम अछि तो लिमिटिंग फ्रिक्शन टेंशन फोर्स सेम अछि तो 8 न्यूटन जोटा कि हमर हॉरिजॉन्टल रे वर्टिकल रे आर सहित एमजी समान हॉरिजॉन्टल रे टी सहित लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम कारण पट जाइनी अच्छा आमे कोन जानिचे जे वी नो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोन जानिचे स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस कोन जानिचे एफ एस लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय आर अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शन टा केते एठी 8 न्यूटन आर टा केते 20 न्यूटन इज इक्वल टू 0.40 तो म्यू एस है 0.40 है फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन बर्तमान देखिए फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन पे हम बाहर करिया म्यू के टा बाहर करिया सेमति लिखिया हियर आर इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू 20 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन माने जते बेले वस्तुटा मोशन करूची मोशन कले केते आ 4 न्यूटन एक्स्ट्रा दिया होची तो एंड काइनेटिक फ्रिक्शन टी सहित समान आछे जोटा कि हमर 4 न्यूटन तो जतले 4 न्यूटन दिया होची सेतले काइनेटिक फ्रिक्शन टा एक्ट करतो टी सहित एफ के हे जो एटा एफ के हेले 4 न्यूटन आसीबरी तो लेख तो म्यू के इज इक्वल टू एफ के बाय आर एटा जानिचे वी नो लिखि दबो वी नो इज इक्वल टू केते 4/20 इज इक्वल टू 0.20 ओके तो प्रॉब्लम को सॉल्व अच्छा तो चला आ गोटे प्रॉब्लम करा प्रॉब्लम 3 करो प्रॉब्लम 3 कोन ना ए फोर्स ऑफ 49 न्यूटन is just sufficient to pull a block of forward जार वेट होजी 10 kg on a rough horizontal surface okay now calculate the coefficient of friction and angle of friction coefficient of friction and angle of फ्रिक्शन म्यू आउ एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा दुटा का बाहर करिया तो सॉल्यूशन लिखिया ओके देखो हमर कोन कोन तत्व अछि ए फोर्स ऑफ 49 न्यूटन अप्लाई करा अछि नाउ अप्लाइड फोर्स पी नो कारण फ्रिक्शन टा एफ नो ना तो एटा को पी नै जो हला 49 न्यूटन आ कोन देछि मास देछि हमरो 10 केजी ओके आ जी तो जानि छ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो बाहर करो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू केते जानि छ एफ बाय आर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन लागते एफ बाय आर जानि छ अच्छा देखो एटा बॉडीटा तो वेटटा होची कोठी अछि एम जी तळु को आसीबो ये हला आर अच्छा एटी कोएफिशिएंट फ्रिक्शन जो एफ एफ टा कोन अप्लाइड फोर्स एफ तो नो एटा हमरो पी पी करते पी बाय आर अप्लाइड फोर्स बाय आर
तो इज इक्वाल टू केते पी बाई आर का सहित बैलेंस अच्छे एम जी तो इज इक्वाल टू 49 बाई एम है 10 इंटू जी है 9.8 तो इज इक्वाल टू आसो यहाँ जो 98 49 बाई 98 इज इक्वाल टू 1/2 इज इक्वाल टू 0.5 तो म्यूटा है आमर अथवा म्यू इज इक्वाल टू 0.5 तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला 0.5 अच्छा आज हम जाने म्यू इज इक्वाल टू tan थीटा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जा कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से ताले म्यू इज इक्वाल टू tan थीटा इज इक्वाल टू 0.5 तम थीटा इज इक्वाल टू आसीबो tan इनवर्स 0.5 so this is the angle of friction and this is the coefficient friction hence angle of friction is 0.5 angle of friction 0.5 sorry angle of friction is tan inverse 0.5 and coefficient of friction is 0.5 सहित लॉज ऑफ मोशन गोटे टॉपिक सरला आम जा बर्तमान लॉज ऑफ मोशन रो नेक्स्ट टॉपिक आम पढ़िया सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स होची कौन देखिबा मन एक तो सेंट्रीपेटल फोर्स होची देखो फर्स्ट बुझा सपोज तुम ये गोटे ठिया होच गोटे रस्सी रे गोटे गोड़ी बा पत्थर गोटे बांधिकी गिरी गिरी बुलाऊच सपोज गोटेटा अच्छे ओके तो जिते तुम कंटिन्यू घूराऊच ये गोटे वस्तुटा गोटे सर्कुलर मोशन से घूरुची जिते वस्तुटा कंटिन्यू सर्कुलर मोशन में घूरुची तो ये सेंटर आड़ को ये गोटे तुम कौन टाणुच तो इड़ से वस्तुटा को तुम टाणुच प्रत्येक जगार एमती प्रत्येक जगार से कौन हो फोर्सटा एटिकी एक्ट कर तो दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स बुझल बुझला पर आम डेरिवेशन करिया तो फास्ट बुझ तमें कौन कर जो फोर्सटा गोटे वस्तु को गोटे सर्कुलर पाथ रे मूव कराए गोटे जो वस्तु गोटे बॉडी जो सर्कुलर पाथ रे मूव करुए गोटे सर्कुलर पाथ रे मूव करुए से जो फोर्स एक्ट पड़े तो ये सेंटर गोटे फोर्स एक्ट कर जी कि वस्तुटा गोटे सर्कुलर गोटे निर्दिष्ट दिगरे सर्कुलर मोशन मूव कराए तो दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स बा जो फोर्स गोटे वस्तुटे सर्कुलर मोशन रे मूव करने जो फोर्स ताको दरकार हुए चले क्या तमने ए फोर्स रिक्वायर्ड टू कौन करे ए फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक ए बॉडी मूव along a circular path with uniform speed गोटे स्पीड रे घुराए दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स हला कहले क्या ना फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक ए फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी along a circular path at a uniform speed is called centripetal force so lekho definition a force which required to make a body move along a circular path with uniform speed is called centripetal force okay
ଆଉ ମନେ ରଖି ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ଫୋର୍ସଟା ସବୁବେଳେ ରାଡ଼ିୟସ୍ ଉପରେ ସେଣ୍ଟର ଆଡ଼କୁ ଆକ୍ଟ କରେ ରାଡ଼ିୟସ୍ ଦେଇକି, and it always acts along the radius, এটা ସଦାବେଳେ ରାଡ଼ିୟସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ଟ କରେ କୁଆଡ଼େ ନା ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ସର୍କୁଲାର ପାଥ, এই ସର୍କୁଲାର ପାଥର ସେଣ୍ଟର ଆଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟ କରେ। ସୋ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍, it always acts along the radius, radius ଉପରେ ଆକ୍ଟ କରେ, radius and towards କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, and towards the center of the circular path. ବୁଝିପାରିଲ? A force which is required to make a body to move along a circular path with uniform speed is called centripetal force, and it always acts along the radius and towards the center of the circular path. Okay. तो बर्तमान ताको एक्सप्रेशन करिया, एक्सप्रेशन बा डेरिवेशन ताको हमें डिराइव करिया। तो गोटे सर्कुलर पाथ रे गोटे बॉडीटे मूव करुछि से का भलरे बुझ, सर्कुलर पाथ रे बुझुछि सबतर सेंटर हो ओ चारटा पोजीशन नबा, एई जगह गोटे बॉडी अछि, एई जगह गोटे बॉडी अछि, एई जगह बॉडी अछि, प्रति प्लेस रे तार डायरेक्शन बाहर करे। ये कोड एक्ट करछि, तार रेडियस एपटे एक्ट करछि, ये भी एपट को एक्ट करछि, सेंटीमीटर फोर्स ए भीतर आडे सेंटर आड़ को सब एक्ट करे। तो ये सेंट्रिपेटल फोर्स। ओके, तो मन जो गोटे वस्तुटे कंटिन्यू सर्कल उपर गोटे सर्कुलर पाथ रे मूव करे, तार डायरेक्शन कुआडे हम, तार वेलोसिटी कुआडे हम। सपोज वस्तुटा बुलुची, एई जगह ताको छाड़ी देले छिंडीगला, पथरटा छिंडीगला गुड़ माने जो रस्सी जो बुलाउछ सूतारे बांधी छिंडीगला, एटा कुआडे जीव मतलब एट जो छिंडीला, जदि तुम एमती बुलुची ताले कुआडे पड़ो, गोटे टेंजेंट हिंक सियाडे पळेबो। एटा तार वेलोसिटी, ए दिगर से वेलोसिटी। सपोज एडू छिंडी गला, तार एई जगह तार वेलोसिटी कुआडे हम, देखो तार एई दिगर आसीबो, जोटी छिंडीला देखो सियाडे पड़ो। जदि एट छिंडीला ताले वेलोसिटी एई दिगर हम, एट छिंडीला वेलोसिटी एई दिगर हम, आर एई दिगर वेलोसिटी, आर एई दिगर वेलोसिटी, आर एई दिगर वेलोसिटी। ओके, तो लिखिबा when a body moves in a uniform circular motion, लिखो when a body moves in uniform circular motion, its velocity changes continue, velocity change हेबो, एटी कोन चेंज हेबो, ए डायरेक्शन पळेबो, एटी जदी तार वेलोसिटी ए डायरेक्शन आसियो, एटी तार वेलोसिटी ए डायरेक्शन आसियो, एटी प्रति प्लेस रे तार वेलोसिटी चेंज होतिबो। इट्स वेलोसिटी changes continuously, its velocity changes continuously। कहीं कौन पाई, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, जेहेतु डायरेक्शन सब जगह चेंज होजी तो वेलोसिटी भी चेंज हम, ड्यू टू चेंज इन direction of motion of the body। अच्छा, जदि वेलोसिटी चेंज है तो आम जानब एक्सेलरेशन, हेन्स एक्सेलरेशन कौन हम, एक्स रेडियसली रेडियल इनवर्ड, तो एक्सेलरेशन टा कोड आसीबो, तो एयाडे आसीबो, कारण फोर्स जो एक्ट होजी, फोर्स तो दिग सहित एक्सेलरेशन दिग सेम आसीबो, तो एक्सेलरेशन एक्ट्स रेडियली इनवर्ड्स,
is called centripetal acceleration. Centripetal acceleration. तो ये कौन हम तब a is equal to ଆସିବ v square by r. ଏଟା ଯେତେବେଳେ सर्कुलर मोशन है बोले एमती a is equal to v square by r is equal to हमरा आसीबो r ओमेगा स्क्वायर कारण सेंटर जितेबाला वस्तुटा गोटे सर्कुलर मोशन है बोले ये आगे जानते v is equal to r ओमेगा. तो v is equal to r ओमेगा तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r कटिगला आसीबो r ओमेगा स्क्वायर एटा को मन रखी दबो हियर एटा कोडा कोन देखि दबो v is equal to यूनिफॉर्म v टा हो हमरा लिनियर स्पीड ए जोटा एटा हला हमरा v एटा कोन लिनियर जिगर जीव ना लिनियर स्पीड. अच्छा ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड ये जो दिगरे जाउछि एटा हला ओमेगा हला एंगुलर स्पीड r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. ओके तो एट देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन according to Newton's second law of motion F is equal to m into a ये कहले कौन centripetal acceleration. Okay अतएव F is equal to m a हला v square by r is equal to m r omega square. इटा को नोट कर दियो. तो बर्तमान जा एग्जांपल ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स. एग्जांपल ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स. नंबर 1 when a stone rotated in a circle the tension in the string provided centripetal force. ଯେତେବେଳେ पूरे स्टोन को रोटेट करूच सेतବେଳେ एटा हला कोन हमर सेंट्रिपेटल फोर्स. आ एटा हम जानि जे स्ट्रिंग गोटे पत्थर गोटे कोनसी गोटे पत्थर गोटे स्टोन टा जेतବେଳେ हम घुराउचे तो सेटा हमर एटा कोन होची गोटे सूता द्वारा जेतବେଳେ टाणुची फोर्स टा एटा को हम टेंशन फोर्स कहूचे. तो दैट इज द टेंशन इज सेंट्रिपेटल फोर्स. ठीक है when planet moves around the sun provides the gravitational force and this force is also centripetal force. Number 3 example
when a car taking a circular turn, ଯେତେବେଳେ କାର ଗୋଟେ circular turn ନିଏ କୋଉଠି on a horizontal road, the centripetal force is provided by the force of frictional force द्वारा provide होती कोठी ना between tires and the road. For when an electron revolving round the nucleus, तो गोटे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारिपटे बुले सेतेबेले the centripetal force is provided by the का द्वारा electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction का मतलब between electron and nucleus. Electrostatic force of attraction तर दुईटा चार्ज अच्छी तर Q1 Q2, तो Q1 और Q2 ये प्लस प्लस हो बा प्लस माइनस हो बा माइनस माइनस हो तो से मध्य गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटा सेकंड रे पड़ो खाली मन तो एटा प्रोवाइडेड सेंट्रिपेटल फोर्स तो सेंट्रिपेटल फोर्स सर जाए नेक्स्ट वीडियो रे प्रॉब्लम करबा ता सहित लास्ट टॉपिक ऊपर जीवा ओके तो गुड नाइट।